बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए SST जनरल का जो पेपर हो चुका है आज यानी 17/2/2024 को, उसी पेपर को कम्प्लीटली एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले जो 15 और 16 तारीख को पेपर्स हुए थे वो भी कम्प्लीटली एक वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए आज का पेपर शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 17 फरवरी 2024 का पेपर है, SST जनरल का है, जनरल कैटेगरी BPS 16 का है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन है। Question number 1, who presented the national flag to the first constituent assembly? लियाकत अली खान थे वो, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, on which date quaid azam addressed to the constituent assembly for the first time? 11 अगस्त 1947 की बात है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, इस्लामाबाद was officially declared as capital of Pakistan 14 अगस्त 1967 को, ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज लेड 1913 की बात है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट PRODA वाज प्रोमulgated 1949 की बात है, ऑप्शन बी है। 6 नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनन थे, ऑप्शन ए करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन, विच डॉक्यूमेंट रिप्लेस्ड द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? आयूब खान लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर्स, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 8, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान president is elected by both houses of parliament and provincial assemblies, option D correct है। 9 number question, which is the second largest river of Pakistan? Sutlej is the second largest river of Pakistan। 10 number question, who led the namazi janaza of quaid azam? Allama Shabbir Ahmad Usmani, option बी करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली? ऑप्शन बी जो है ना, दिस इज स्पेल्ड रॉन्गली। और 12 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड स्पेल्ड रॉन्गली? इसमें ऑप्शन सी मिशनरी, ये रॉन्गली रॉन्ग है, ऑप्शन सी है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फिनिटिव? टू रन, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 years, ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन? ऑप्शन डी बाय, दिस इज नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन। Question number 16, identify the correct sentence that uses the correct articles. Option D. An elephant is the largest land animal. Question number 17, meaning of the idiom take up the hatchet. Option D correct है, prepare for or go to war. 18 number question, you don't need to when this watch change the voice, option A correct है, this watch need not to be wound। 19 number, the scheme permits the investors to buy the shares from foreign companies, change the voice, option C। Under the scheme, the investors are permitted to buy share from foreign companies,
और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अकरिंग एट नाइट, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ज़कात वाज मेड कंपल्सरी इन सेकंड हिजरी, ऑप्शन बी है। 22 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सजदस आर इन मदनी सूरत 3, ऑप्शन ए है। 23 नंबर क्वेश्चन, तयम्मुम का जिक्र सूरह माइदा में है, ऑप्शन ए है। 24, हाउ सलमान पारसी was freed as slave, option C. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion carried out plantation in the garden in lieu thereof. 25, the name of Prophet whose age has been mentioned in the Quran, Hazrat Nuh alayhi salam, option B है। 26, name the wife of Prophet sallallahu alaihi wasallam who was the daughter of Hazrat Umar Farooq radiyallahu ta'ala anhu, option A Hafsa radiyallahu ta'ala anha। 27, केव हीरा गार हीरा जबल नूर में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, 28, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन 28, द लेटरल मीनिंग ऑफ जिहाद टू स्ट्राइव, ऑप्शन ए करेक्ट है। 29 नंबर क्वेश्चन, विच सूरा इज आल्सो नोन एज सूरह विदा, सूरह अल नसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गज़वा अबवा, गज़वा विदा, ऑप्शन ए है। 31 नंबर क्वेश्चन, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज कम्युनिटी, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज कम्युनिटी, ऑप्शन सी को देखें। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया एंड शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कम्युनिटी दैट शेयर्स अ कॉमन कल्चरल बैकग्राउंड, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, होमोजीनियस कम्युनिटी। 33 नंबर देखिए, हाउ डज सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सोसाइटी शेप्स एंड इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल बिहेवियर थ्रू नॉर्म्स एंड वैल्यूज। 34, what is the role of culture in the relationship between an individual and society, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी को देखें, कल्चर शेप्स individuals' beliefs, values and behavior within a society. 35, what is the primary aim of the state's cultural function? So correct option is option C देखें, to preserve and promote cultural heritage. Question number 36. Why is education considered a key aspect of a welfare state? ऑप्शन सी को देखें, टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स। 37 नंबर, व्हाट डज द टर्म सोवर्निटी रिफर्स टू इन पॉलिटिकल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल साइंस, सॉरी। ऑप्शन बी, द सुप्रीम एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट। 38, what is the concept of citizenship education? Concept of citizenship education, option B देखें,
educating individuals about their rights and responsibility as citizen. 39. How does the concept of e-citizenship or digital citizenship impact modern civic life? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी देखिए. E-citizenship involves active participation and responsibility in the digital realm. 40. How many amendments have been made to the Constitution of Pakistan so far? 25. Option C. Question number 41. मजमून और मकाले में क्या फर्क है? तासुराती और ताकीकाती. ऑप्शन ए. 42 नंबर क्वेश्चन देखिए. उर्दू दारुल मुसन्निफीन किसने कायम की? मौलाना शिबली नोमानी. 43. मौलाना शिबली ने किताब मामून में किसकी सेवानें लिखी है? खलीफा मामून रशीद. ऑप्शन सी. 44. वो इसम जिस पर काम का असर हुआ उसे क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं. ऑप्शन डी. 45. उर्दू में मरसिये की हियत किस हियत में लिखे गए? मुसद्दस में. ऑप्शन ए है. 46 नंबर क्वेश्चन. नोहा और सलाम किस सम की झेली असनाफ हैं? मरसिया. ऑप्शन डी करेक्ट है. 47. ज़र्ब कलीम किस शायर का मजमूआ अल्लामा इक़बाल का है? ऑप्शन डी है. 48 नंबर क्वेश्चन. अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में कायम की थी. ऑप्शन सी है. 49 नंबर. नावल किस जुबान का लफ्ज है? अतालवी जुबान का लफ्ज है. और क्वेश्चन नंबर 50. उर्दू मरसिया निगारी का आगाज किस शेर से होता है? दक्कन से. इस क्वेश्चन पर एक दोस्त ने कमेंट की है कि लखनऊ से हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये दक्कन है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने खुद भी कंफर्म करना है दोस्तों. दिस वाज द फर्स्ट कंप्लीट पेपर. प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो and don't forget to subscribe the channel.